हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका. दिस इज श्वेता here. Today I'm going to discuss coordinate geometry derivation of section formula. In the previous lecture we discussed about section formula, but there were few queries related to that, how we got that formula. So in this lecture I am going to do the derivation of section formula. So here we start with, I have drawn a plane in this manner. Already told you this is x-axis, this is y-axis. So I have told you what is the formula. So let's suppose this is a line and we are talking about division of this line. This line is AB. There is any point P on the line which is dividing it in the ratio m1 ratio m2. Let the coordinate of this point A as x1 y1, P as xy, B as x2 y2. Right? So as a construction, what I have done, I have drawn a line, straight line, which is perpendicular from here, a perpendicular line from here, perpendicular line from here, so as I can get some distances. This perpendicular line from here, this is, let this point is C and this point is D. Now if I see over here, if I have to find this distance, this will be equals to AC. अब ये AC कहां से आएगा? अगर मैं इतने में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा. अगर मैं ये, लेट्स सपोज इनको कुछ नाम दे देते हैं, ये O है, ये L है, M है, N है, राइट? अब अगर मुझे LM फाइंड करना है तो हाउ आई कैन गेट LM? LM कैन बी OM माइनस ON. OM जो है OM हमारे पास X है, OL हमारे पास X1 है. तो अगर मैं x में से x1 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? LM, और आई कैन से AC. So I will write over here that LM equal to AC is equals to OM minus OL, where OM is x minus OL is x1. ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये बेसिकली आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है एक्सिस का, राइट? Similarly, if I talk about, I have to find CD. What will be CD? CD will be equals to MN, right? अब MN हमारे पास कैसे आएगा? अगर मैं ON में से OM को माइनस कर दूं तो मेरे पास MN आ जाएगा. अब ON क्या है हमारे पास? ON is x2 में से OM क्या है हमारे पास? X, right? So over here what we will get? MN equal to CD equal to MN we will get by ON minus OM, where ON is x2 and OM is x, right? And now my AP ratio BP is M1 ratio M2. ट्राइंगल्स में एक कंसेप्ट आता है, मे बी ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हो, कि अगर हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, से द CP लाइन इज पैरेलल टू BD, और क्लास 9th में आपने सिमिलैरिटी का कंसेप्ट पढ़ा है. तो सिमिलैरिटी में क्या है? ये जो 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो लाइन्स हमारी पैरेलल हो गई. पैरेलल लाइन्स है तो यहां हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, दैट इज AC अपॉन CD will be equals to CP upon BD using BPT, that is basic proportionality theorem. Okay, using this theorem what we got? AC upon CD is equals to CP upon BD. That is कि जब यहाँ 90 डिग्री का मतलब लाइन्स पैरेलल है तो ये जो रेशियो रहता है, दिस रेशियो इज इक्वल, राइट? सो आई टेकन ओवर दैट AC जो है मेरा दैट इज x माइनस x1, CD जो है दैट इज x2 माइनस x,
और CP जो है वो मेरा M1 है और BD जो है, सॉरी दिस शुड बी AP, AC to okay AP to BP. This is M1 and this is M2. Now what we will do? We will cross multiply. What we are getting from cross multiplication? M2 into X minus M2 into X1 is equals to M1 into X2 minus M1 into X. Now what I get? Here it is M1 X2. This minus M2 X1 will go over here, will become plus M2 X1. This is M2X. This M1X will come over here, M1X. From here I can take X as common. So I have taken X as common and I got M1 plus M2 inside. Here I have M1 X2 plus M2 X1. This M1 plus M2 will go in division. So from here we got value of X as M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2. Right? So this way we have derived the value of X using section formula. Same we can get for Y also, that you will be doing by yourself. मैं सिर्फ आपको एक कंटेंट समझाऊंगी कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू को हम फेच कर सकते हैं. से यहाँ पे हमने यूज किया AC to CD, AP to BP, राइट. नेक्स्ट में हम CP to BD एंड AP to BP यूज कर सकते हैं. अगर हमें Y की बात करनी है तो Y कोऑर्डिनेट्स हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होते हैं. तो वर्टिकल लाइंस में अगर हम CP की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो व्हाट विल बी CP? CP विल बी इक्वल्स टू दिस इज Y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज Y1. दैट इज दिस विल बी Y माइनस Y1. अगर हम BD की बात करें तो BD क्या होगा? B का कोऑर्डिनेट Y2, D का कोऑर्डिनेट हमारे पास Y1. तो Y2 माइनस Y1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? BD. सो दिस शुड बी Y2 माइनस Y1. तो यहां से आप इसी चीज में इक्वल टू साथ में और रख लेंगे हम, दैट इज CP to BD. राइट. तो अब आप कंपैरिजन करेंगे CP to BD का और उसके साथ में आप कंपैरिजन करेंगे AP to BP का. तो इसी तरह से जब हम प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करते हुए हमारे पास जैसे हमने X का पॉइंट निकाला है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर Y also. So that will be the section formula. Hopefully it is clear to you that how we have derived section formula. Thank you so much.